Okay, students, Assalamu alaikum. Our left remaining paragraph translation, innovation and problem solving. जिद्दत और मसाइल का हल. Innovation, जिद्दत and problem solving मसाइल का हल. Women often bring unique persons. Women often bring unique perspectives and innovative solutions to the problem they address through their business. ख़वातीन अक्सर अपने कारोबार में पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए मुनफरिद नुक्ता नज़र और तख्लीकी हल पेश करती हैं. Their ventures can lead to new ways of thinking, empowering products, services and even the social conditions. इनके कारोबारी मंसूबे नए तरीक़ाकार, मसनूआत, खिदमात यहाँ तक के समाजी हालात को बेहतर बनाने के मौके भी फ़राहम करती हैं. Despite the challenges, women entrepreneurs in Pakistan are finding ways to overcome barriers. चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन कारोबारी अफराद और रुकावटों को अबूर करने के रास्ते तलाश कर रही हैं. Many of them have built strong support network connecting with other female entrepreneurs to share the advice, encouragement and opportunities. इनमें से बहुत सी ख़वातीन ने मज़बूत मावन नेटवर्क्स बनाए हैं, मगर दीगर ख़वातीन कारोबारी अफराद के साथ जुड़कर मशवरे, हौसला अफजाई और मौक़े का तबादला किया है. The growth of the e-commerce and online platform has also given women more flexibility, allowing them to run businesses from their home and bypass some of the mobility issues they face. इनमें से अपने घरों में कारोबार चला सकती हैं, नक़्लो हरकत से मुतालिक पेश आने वाले मसाइल को जज़वी तौर पर हल कर सकती हैं. The government and the non-government organization NGOs, government and the non-government governmental organizations means NGOs are also playing the important role in the supporting women entrepreneurs by providing the financial resources. हुकूमत और गैर हुकूमती तंजीमें ख़वातीन को कारोबारी अफराद की हमायत करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं by providing the financial resources, training to assess the markets. ख़वातीन की मईशत में शमूलियत और माली वसाइल, तरबियत और मार्केट तक रसाई फ़राहम करने में इनकी खिदमात को पहचानने में इजाफ़ा कर रही हैं. With the increased recognition of the women contribute to the economy efforts and being made to create a more inclusive and supportive environment for the female entrepreneur, जिससे ख़वातीन कारोबारी अफराद के लिए एक और ज़्यादा जामिया और मावन माहौल बनाने की कोशिशें जारी कर रही हैं. Last paragraph. The entrepreneurship offers the women the opportunity to realize their full potential, whether in the historical times or the modern era. Women entrepreneurs have shown that they overcome obstacles and lead the successful ventures by society and unlock the potential of half its pollution, paving the way of the bright. हुकूमत कारोबारी सरगर्मियाँ ख़वातीन को अपने मुकम्मल सलाहियत की हकीकत का रूप देने का मौका फ़राहम करती हैं. चाहे तारीख़ी एतबार हों या जदीद दौर, ख़वातीन कारोबारी अफराद ने साबित किया कि वो मुश्किलात पर काबू पा सकती हैं. By supporting the women entrepreneurship or addressing the barriers that they face, society can unlock the potential of half its pollution, paving the way to a brighter future. और ख़वातीन कारोबारी सरगर्मियों की हिमायत करके इनकी दरपेश रुकावटों को दूर करके माशरा अपनी आधी आबादी की सलाहियत को इस्तेमाल में ला सकता है, जो रोशन मुस्तकबिल के लिए राह हमवार करता है. Okay, next students, glossary words meaning. Corporation, a large business company. E-commerce, business that is conducted on the network. Entrepreneurship, the activity of making the money of starting and running the businesses.
Innovative, introducing or using the new ideas, ways of doing something, etc. Microfinance, a system of providing the services such as lending money and saving for people who are too poor and to use the bank's norms, association, or the pattern of behavior that is used or expected. Sociological, connected with the society and the way it is organized. Stereotype, a fixed idea or image that can people have the particular type of person or thing. Strategies, done as a part of plan that is meant to achieve a particular purpose or to gain an advantages. Thrive, to become and continue to be the successful, strong, healthy, etc. Okay, dear students, all of you have learned the lesson, have learned the previous lesson, and this is lesson from the translation of chapter number 5. You will be learned. Okay, students, Allah Hafiz. Fi Manillah.